विराट कोहली ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया, जिससे भारतीय टीम में 2 बदलाव हुए और राहुल और उमेश यादव को टीम से बाहर जाना पड़ा, जिनकी जगह पर मोहम्मद शमी और शिखर धवन टीम में आए। भारत की शुरुआत तो अच्छी रही, लेकिन पारी के 10वें ओवर में शिखर धवन एक स्वीप शॉट खेलकर बाउंड्री पर फील्डर को कैच थमा बैठे, जिसकी वजह से भारत को पहला झटका लगा। इसके बाद फिर चेतेश्वर पुजारा भी एक शानदार रणनीति का शिकार बने और वो भी 23 रन बनाकर आउट हो गए। शिखर धवन पुजारा दोनों 23 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद मुरली विजय और विराट कोहली ने मिलकर टीम को आगे बढ़ाया और मुरली विजय ने अपनी शानदार 50 जमा की लंच से पहले, और लंच तक विराट कोहली 17 रन पर नॉट आउट थे। मुरली विजय अपना अर्धशतक जमा के खेल रहे थे। लंच के बाद विराट कोहली ने भी अपना अर्धशतक जमाया और भारत की रणगति को तेज़ी से बढ़ाया। दोनों ने मिलकर 200 से ज़्यादा रन की पार्टनरशिप की। टी से ठीक पहले मुरली विजय ने अपना शतक पूरा किया और टी होने तक विराट कोहली 94 रनों पर नॉट आउट गए। टी के बाद विराट कोहली ने भी अपना शतक पूरा किया और बताया कि वो किस तरह मुरली विजय और विराट कोहली ने मैदान की 2 तरफ रन बनाए। उन्होंने हर एक शॉट खेला। विराट कोहली ने टेस्ट में कई रिकॉर्ड बनाए। वो भारत की तरफ से सबसे तेज 5000 रन बनाने खिलाड़ी बन गए और एक कैलेंडर में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले भारत के वो पहले खिलाड़ी बने। उन्होंने 46 मैचों में 2646 रन बनाए और 2000 इसी साल बनाए। दोनों ने मिलकर लगभग 270-80 रन की पार्टनरशिप की। विराट कोहली की कवर ड्राइव, उससे उन्होंने अपनी सेंचुरी पूरी की और उनका जश्न शानदार था। और विराट कोहली मैच ख़त्म होने तक नाबाद गए। मुरली विजय भी अपने शतक बनाने का सदकनन की गेंद पे आउट हो गए कि विराट कोहली शतक बनाकर खड़े रहे। उन्होंने कट पुल सारे शॉट खेले। इससे पहले धवन और पुजारा 23 रन बनाकर आउट हुए। मुरली विजय और विराट कोहली ने इसके बाद पारी संभाली और दोनों मैच के अंत तक गए। और जिस तरह से मुरली विजय ने अपने सेलिब्रेशन किए, उससे पता चलता है किस फॉर्म में कितना कॉन्फिडेंस उनको है। पर बाद में रहाणे भी जल्दी आउट हुए, 1 रन बनाकर आउट हो गए। दिन का खेल ख़त्म होने तक भारत का स्कोर 375 रन पे 4 विकेट के नुकसान पे है। भारत और श्रीलंका के बीच दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान पर खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच के पहले दिन कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और दोनों टीमों में कुछ बदलाव देखने को मिले। भारतीय टीम में विराट कोहली, मुरली विजय, चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, रोहित शर्मा, अश्विन, शाह, जडेजा, ईशांत शर्मा, मोहम्मद शमी और शिखर धवन है। तो श्रीलंकन टीम में दिनेश चंदीमाल, सदीरा समरविक्रम, दिमुथ करुणरत्ने, मैथ्यूज, डिकवेला, दिलरुवान परेरा, सुरंगा लकमल, राहुल गांगे, धनंजय डी सिल्वा, लक्षण संदकना, रोशिन सिल्वा हैं। भारतीय ओपनर में मुरली विजय और शिखर धवन ने टीम को अच्छी शुरुआत दी। तो उन्होंने स्टार्ट में अटैकिंग खेलना चालू किया। भारत के कप्तान विराट कोहली ने शनिवार को फिरोज शाह कोटला मैदान पर खेले जा रहे तीसरे और निर्णायक टेस्ट मैच के टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। भारत 3 टेस्ट मैचों की सीरीज में 1-0 से बढ़त लिए हुए है। कोलकाता में खेला गया पहला टेस्ट ड्रॉ था, जबकि नागपुर में खेले गए दूसरे टेस्ट को भारत ने जीतकर बढ़त बनाई थी। श्रीलंका की कोशिश इस टेस्ट मैच को जीतकर सीरीज का अंत बराबरी करने पर होगी। वहीं भारत की नज़रें ड्रॉ या जीत पर हासिल करते हुए लगातार 9वें टेस्ट जीत पर हैं। श्रीलंका ने अपनी टीम में 3 बदलाव किए। चोट के कारण रंगना हेरात नहीं खेल रहे हैं। उनके स्थान पर लक्षण सदकन को अंतिम 11 में जगह मिली। वहीं लहिरू थरिमा तासुन सनुका को बाहर बैठना पड़ा है। इन दोनों के स्थान पर रोशन सिल्वा को पदार्पण का मौका मिला और जबकि धनंजय डी सिल्वा को भी टीम में जगह मिली। वहीं भारत में 2 बदलाव हुए। शिखर धवन की वापसी हुई है, लोकेश राहुल के स्थान पर आए हैं। वहीं टेस्ट मैच से बाहर बैठने के बाद मोहम्मद शमी भी वापसी कर रहे हैं। उमेश यादव को बाहर जाना पड़ा है। भारतीय तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए शिखर धवन और मुरली विजय उतरे। मुरली विजय ने पहले ओवर में 2 चौके लगाकर टीम को तेज शुरुआत दी। उसका शिखर धवन ने भी रनों की स्पीड बढ़ाई। तूफानी रफ्तार में श्रीलंकाई गेंदबाजों पर दोनों बल्लेबाज बरस पड़े। उसका शिखर धवन बेहद ही खराब शॉट खेलकर आउट हुए। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे शिखर धवन 23 रन बनाकर परेरा की गेंद पर धवन ने स्वीप शॉट खेलकर खुद का विकेट गंवाया। उस स्वीप शॉट खेलने पर बाउंड्री पर खड़े फील्डर ने धवन का कैच लपका
उसका चेतेश्वर पुजारा बल्लेबाजी करने के लिए आए। उन्होंने भी 4 चौके की मदद से 23 रन बनाए। जब वो आउट हुए तो भारत का स्कोर 23 रन था, 78 रन था। पुजारा 23 रन बनाकर आउट हुए। उसके बाद लंच तक टीम इंडिया का स्कोर बिना और कोई विकेट खोने के बगैर 118 रन था, 2 विकेट के नुकसान पर। मुरली विजय अर्धशतक बना के खेल रहे, तो वहीं कप्तान विराट कोहली भी 20 रन बना चुके हैं। दिस इज द इंग्लिश हाईलाइट ऑफ द इंडिया वर्सेस श्रीलंका थर्ड टेस्ट एट दिल्ली. First over, third ball, Lakmal to Vijay for not exactly where it intended, but he will take it length ball outside of Vijay, open the face to the bat and guide it through the gap between the third slip and gully for the first boundary of the game. Good start by Vijay, he looks in control. Fourth ball of the over, Lakmal to Vijay, 4 fuller on the pads, Vijay plays it on the leg side for another boundary. India are up and running here in a delay. Lakmal not bowling the perfect line like he did in 2 tests. These are the welcome runs at the start of the inning of India. Gamge to Vijay, 4 elegance at its best. That is a shot of a man who believes in his abilities and oozing confidence. Full length ball on middle, not much navel in the air. Vijay strided forward and just struck it past his partner for the delightful shot of a boundary. Lakmal to Dhawan, 4 fuller in a length again. Around off, Dhawan drives it toward the cover region for his first boundary. Glorious looking shot by Dhawan. He held his pose and the ball raced to the fence. Gamge to Shikhar Dhawan, 4 executive. Harsha Bhogle on air mentioned that there are something about a batsman when he plays a shot and doesn't move. After that full length delivery outside of Dhawan tried to play the boundary. Lakmal to Vijay, 4 good length ball outside of Vijay, plays it with the soft bottom and it goes between the third slip and gully region for a boundary. Internationally done by Vijay, playing positive cricket, get quick runs. Pereira to Dhawan, 4 easy picking shot delivery outside of, spinning away. Dhawan eyes light up, he rocks back and correct through the cover point, pick up a boundary. Pereira to Shikhar Dhawan, 4 deft. Dhawan is looking Omanian at the moment. Pereira comes around the wicket and balls an arm ball outside of. Dhawan champ back, watches the closely, it guided first keeper for a boundary. 10th over, last ball, Pereira to Dhawan, out 100 test wicket for a Pereira. He became the third Sri Lankan spinner after the Muralidharan and here to achieve the feat. Dhawan throws his wicket away after a promising start. That was a loose shot early in the inning and he pays the price for it. Coming back to the ball, it's slow through the air, drifting in towards the leg, stump down the knee. Is close to the sweep, but the heads ball over the fall is on the top of the bounce. He ends up to the ending. There is a lot of haze around the ball, skiing toward the Lakmal at deep square leg. The pacer almost loses it to the background. Pereira to Murali Vijay, 4 what a shot, tossed up delivery on the off widget, straight forward and trails it past the driving mid-on fielder and the ball races to the fence for the boundary. Pereira to Cheteshwar Pujara, 4 shorter in a length, turning in. Pujara makes good use of the deft creases and turns it through the boundary square leg for boundary. Pereira to Cheteshwar Pujara, 4 poor delivery and dully punished shot and spinning down. Pujara tucks it past square leg, who sprint after it but fails to keep the ball in a play. Boundary. Gamge to Pujara, 4 won't miss out on this ball. He picks up the length quickly and drives it beautifully on mid-on region for a boundary. After continuous short ball, he gets the fuller ball and plays a beautiful Lakmal Sanaknant Pujara, 4 runs, rank long off and he's away with a dead sin around the off stump, gets a boundary. Gamge to Pujara, out, has fallen to a well-planned Sri Lanka move. Gamge balls his field length ball on the pads. Pujara tries to flick it away. He couldn't keep the ball down and hits it straight to the fielder at leg gully. A sharp catch by Shamara Vikram Trier.
and Pujara stay at the crease. It's very unlikely from Pujara. He has never played the aerial shot on so soon he is inning. The move have a leg gully has worked for the Sri Lanka. Gamge to Virat Kohli, 4 off the mark in style. Full length ball from the Gamge around the middle and leg. Virat Kohli flicks it through the mid wicket region. The ball races away from the fence for a boundary. Gamge to Vijay for that come right of the textbook for the kids watching. This is how you should play the cover drive. Line delivery around the holding in line boundary. Gamge to Murli Vijay is focusing on timing and he is getting the desired result. He has already produced a colorful area of strokes, foolish in a length and angling into Murli. He clips it beautifully through the mid wicket for a region boundary. Sandakanan to Virat Kohli, 4 ball to Kohli's strength and he will keep miling you all day long. Full length delivery, middle again angling. The Indian skipper brings those wrists into play and clips it with a lots of command. Gets boundary. Sandakanan to Virat Kohli, 4. How easy to eyes was that shot from the Indian skipper. In a complete control, foolish in a length around the off. Kohli clears his front leg and drives it elegantly through the covers and gets a boundary. Suranga Lakmal to Murli Vijay, 4 overthrows, 16 test 50 for Murli Vijay. What a way to get the land arc. Length delivery by Lakmal and Vijay opens to face bat and plays it toward the cover point region for a quick single. Devendran Roshan Shiva moves to his right, pick up the ball and throw the overthrows runs for a boundary. Lakmal to Murli Vijay, 4. Not a good way to start the Lakmal Vijay. It is presenting the boundary. Lakmal to Kohli, for 50 runs stand between the Vijay and Kohli. This is kind of a quick time. These two have the combined well after they had lost a couple of wickets before the 100 on the board. Lakmal to Virat Kohli, 4. 5,000 test run for the Virat Kohli. 4th fastest Indian to the mark. He is unstoppable when he is such good flow. That is right now. Pereira to Virat Kohli, 4. Wrist all the way. How does it manage to look good and gets the boundary? Pereira to Virat Kohli, 4. Kohli just fits on spinner and there is another proof of that. Pereira lobs it around Goff and gets a boundary. There Pereira to Virat Kohli, 4. Another one in the over. This is one dangerously checking through. Gamge to Virat Kohli, that's boundary. Yeah, I think we need to put all the superlative away because he might be guilty for overswing them, says Harsavugli on the air. Gamge to Virat Kohli, 4. Over correction from Gamge result in another boundary. That brings up the 15th test 50 for the Virat Kohli, just 52 ball. It is his fastest one. Gamge to Virat Kohli, 4. Often the movement on the body language, the play show the good and easy to has locked, banged it through the boundary. Sadankanan to Virat Kohli, 4. Kohli full spill decide and the ball waiting to be at cover point, says the witty Harsavugli and gets the boundary. Pereira to Virat Kohli, 4. Wow, at this while Kohli went back and flicked such deliveries to the man at deep mid-wicket boundary. Sadaknan to Murli Vijay, 4. 11 test and from Murli Vijay and he's locked at easier from the movement he has walked in previous game, loose short round and that's great boundary. Lakmal to Virat Kohli, 4. Can local leg straight quite when his partner is mastering. No, won't be the boundary. This is the boundary and that's it.